Prime Minister Narendra Modi has asked banks to join the government in shouldering the responsibility of economic growth. He said nationalized banks have been ensured zero interference from higher-ups and political parties, which had proved to be the bane of these institutions in the past. Launching the IDFC Bank, which has started functioning from Madhya Pradesh as a full-fledged bank, Prime Minister said the rural economy had the power to lift the entire economy, but they also needed new efforts and techniques, especially since mobile banking is the future of banking. हम एक सामान्य एग्रीकल्चरिस्ट को या गांव को ध्यान में रख करके या 2-4-10 गांव के बीच में कोल्ड स्टोरेज कैसे बने, वेयर हाउसिंग की व्यवस्था कैसे हो, उसमें बैंकिंग कैसे हो, हम वैल्यू एडिशन में कैसे मदद कर सकते हैं, हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को पकड़ें। आज मैं समझता हूं कि इतनी संभावनाएं पड़ी हुई है। हिंदुस्तान का किसान आज दुनिया के साथ अपने आप तालमेल करने की कोशिश कर रहा है। Narendra Modi said the whole world is looking towards India as the global economy grapples with an economic slowdown. He said the Mudra Bank had disbursed 35,000 crore rupees to small and medium enterprises, which will revitalize the economy in coming days. He also said government was working towards an environment of premiseless, paperless and currency-less banking, through which the issue of black money would also be resolved. शायद आज जो करेंसी प्रिंट करने का खर्चा होता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि ये कारोबार इस प्रकार से बढ़ने वाला है और हमने भी देश को उस दिशा में ले जाना है। और जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के सहारे बैंकिंग करेंगे, जब हम पेपरलेस बैंक की व्यवस्था करेंगे, करेंसीलेस कारोबार चलाएंगे, तो काले धन की संभावनाएं धीरे धीरे जीरो की तरफ चली जाएगी। Prime Minister also said his government has taken various steps to take banks out of the precarious position that had resulted from a high level of non-performing assets in the past. In simple terms, he spelt out the ABC of banking reforms undertaken by his government, especially in areas such as senior appointments, creation of a bank board bureau, recapitalization of banks, de-stressing of assets, empowering bank management through zero interference, creation of a framework of accountability through key performance indicators, and reform of governance of banks. Finance Minister Arun Jaitley said India is undergoing a revolution in banking. ग्रामीण क्षेत्रों में अपना इसका विस्तार होगा। लगभग हर एक के मोबाइल फोन तक, हर एक के घर तक ये जो टेक्नोलॉजी जिसका अभी वर्णन किया गया उसके माध्यम से ये बैंकिंग व्यवस्था पहुंचेगी और इसके माध्यम से केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ नहीं होगा, इससे रोजगार भी बहुत बड़ा होगा। The new Infrastructure Development Finance Company Bank has decided that besides its infrastructure financing core, it would develop a space for itself in retail banking and help the rural economy. Sudhakar Das's report, DD News, Delhi. And